Hi everyone, welcome to this lecture on height and distance, section number 1. In this lecture, we will discuss basic concept of height and distance, then angle of elevation, then angle of separation, and finally we will solve some previous year question of the CDS. So let's start with basic concept. First, let us understand what is height and distance. Height and distance problem are based on right angle triangles and trigonometry ratios. Let's see, this is the building and this is the man standing, and ये man d distance के दूरी पर है और building का height let's s. So this makes a right angle triangle. So now we can solve this type of question by trigonometry ratios like tan theta. Tan theta means perpendicular by base. What is perpendicular? Perpendicular is height and base is the distance from the object. Whenever we observe an object like in any question, whenever we observe an object like tower or tree or building or kite in the sky, this type of question will solve by trigonometric ratios formulas. Uh, let's see. This is an right angle triangle. In this, let's this triangle is this is an ABC triangle. ABC triangle. This is the theta. This is a right angle triangle in which the perpendicular P is the height and this is the base, the distance. Base is the distance. This is the distance. Or this is the hypotenuse. So remember this important relation. Perpendicular means height and base means distance, and hypotenuse that line joining observer and the object. Hypotenuse is a line joining observer and object. Next topic we will discuss the angle of elevation. Angle of elevation is an angle formed when we look upward at an object. In this image, this man look upward to the building. So an angle form theta, an angle theta formed with the base. So this angle is called the angle of elevation. So how we can find out the angle of elevation? By this tan theta formula. So tan theta क्या है? Tan theta equal perpendicular by base. Perpendicular, इसमें perpendicular है height and the base is distance, like is by d. Next we will discuss angle of depression. Angle of depression क्या है? Angle of depression is the angle formed when we look downward from a certain height. So this is the angle of depression alpha.
Just because of this line and this line is parallel, so uh, this angle of elevation theta and angle of depression alpha will be equal. So this is the angle of depression, and then this angle will be angle 90 minus alpha 30 डिग्री 50 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू एंड 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग डिस्कस किया है. Let's see in this is a right angle triangle ABC where angle B is 90 degree and let's say angle C is theta. This is P perpendicular, or this is the base and height 30 degree triangle. 100 degree triangle. 10 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3. 1/√3 means perpendicular by base. और perpendicular by base, perpendicular अगर 1 दिया है तो एंड बेस अगर √3 दिया है तो हाइट के कैसे निकलेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला, हाइट स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Height equal to b square means 3 plus b square means 1 root 4 equal 2. So इसका रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर इज टू बेस इज टू हाइट का रेशियो होगा 1:√3 is to 2. Next, for 45 degree, 10 45 degree equal 10 45 degree means 1 by 1. So perpendicular 1 and base also 1. So अगर हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालेंगे इसका वैल्यू क्या होगा? √1 + 1 equal √2. अभी B:B:A क्या होगा? P is 1, B also 1, and hypotenuse is B is 1, A is √2. Next for 60 degree. Next here we will discuss for 60 degree. 10 60 degree equal 10 60 degree क्या होता है? √3/1. This is the P and this is B base. And then what will be the ratio? First of all, we will find A's will be 3. √3 square means 3 and then 1 square 1 equal √4 equal 2. So what will be the ratio? P is to B is to A's ratio will be √3 is to 1 is to A's means 2.
These three triangles are extremely important because most exam questions are based on these angles. Now we will solve some important questions. Let's start with question number 1. दिया है कि the length of the shadow on the ground of a tall tree of height 45 height 45 meter is 15 √3 meter. What is the angle of elevation of the sun? सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? दिस इज द ट्री. ये ट्री है. दिया हुआ है कि शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए टॉल ट्री. ट्री का हाइट दिया हुआ है 45 डिग्री 45 मीटर. एंड इसका शेडो मीन्स बेस. दिस इज द शेडो और दिस इज द शेडो ऑफ ट्री 15 √3 meter. So what is the angle in the degree of elevation? So we need to find out this theta, angle of elevation. So how we will find? 10 theta will be 45 by 15 √3. कितना बार जाता है? 15. 5 से 3 बार 9 बार 3 by √3. So हम लोग अगर 3 ऊपर लगा दे, इसे भी लगा दे, तो this is 3 and 3 cancel out. So answer will be √3. 10 √3 means theta equal 60 degree. आंसर क्या होगा? 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 158 मीटर लॉन्ग. पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं. ABC triangle and C. This angle theta, angle of elevation. So इसमें दिया है कि string of this is the string 158 meter 158 meter long and it's make an angle 30 degree. थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री एंड विद हॉरिजॉन्टल के साथ काइट का स्ट्रिंग 30 डिग्री दिया है. तो अब क्या बोला है कि व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ द काइट. हम लोग को निकालना है दिस एंगल हाइट ऑफ द. तो हम लोग साइन का फॉर्मूला लगा देंगे. फॉर्मूला साइन 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 30 इक्वल 1 बाय 158. साइन 30 का वैल्यू क्या है? साइन 30 का वैल्यू है साइन 30 का वैल्यू 1/2 is by 158. इस क्या होगा? 158/2. 7 are 14, 18, 79. The answer will be C. Question. Kite is flying at a height of 138. Again we will draw a right angle triangle. This is angle theta. उसका height दिया है 138 from the ground and it attached to string 45 degree. थीटा का वैल्यू दिया है 45. What is the approximate length of string? इसका ये निकालना है. अगर ये 45 डिग्री है तो 10 45 डिग्री इक्वल क्या होगा?
By using the sine formula, sine ratio, we'll find this string length. Sine 45 degree. This is the A. So 130 by A. Sine 45 का वैल्यू क्या है? 1 by root 2 equal 138 into root 2. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? रूट 2 एक ऊपर देंगे, रूट 2 एक नीचे। रूट 2 का वैल्यू मान लेते हैं 138 into root 2 means 1.41. तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.41 into 138, हम लोग का वैल्यू निकालते हैं 194.58। तो इसका वैल्यू होगा t, approximate t 195. Now we will discuss some PYQ of CDS. क्या दिया है? The shadow of an electric pole standing on a ground is 40 meter less when the angle of elevation changing from 30 से जब 40 तक चेंज होता है तो इसका स्टैंडिंग पोल का शेडो 40 मीटर कम होता है। देन लेंथ ऑफ द पोल का लेंथ निकालना है हमें। एक एंगल दिया हुआ है कि 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री रहेगा, उसके बाद क्या होगा? जब 45 डिग्री होगा एंगल 30 डिग्री, और जब 45 डिग्री होगा इसका लेंथ डिक्रीज होके 40 मीटर डिक्रीज होगा। मान लेते हैं इसका टोटल लेंथ है x, तो इसका वैल्यू क्या होगा? x minus 40 डिग्री, एंड दिस इज दिस एज। हमें क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द पोल, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग 1030 का फॉर्मूलाइज करेंगे। 1030 इक्वल एज बाय x, 1045 is by x minus 40. 1030 माने 1 by root 3 12 is by x. 1045 माने 1 होने से is equal x minus 40. So x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? is plus 40, 1 by root 3 equal is by is plus 40. यहाँ से is निकलना है तो is plus 40 equal होगा is root 3. 40 इधर रहा, अगर is उधर जाते तो is कॉमन लेंगे, root 3 minus 40, सॉरी root 3 minus 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा? is होगा 40 by root 3 minus 1। तो इसको अगर हम लोग डिबंक करते हैं तो क्या होगा? नीचे रूट 3 प्लस 1 ऊपर भी, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 3 minus 1 to 40 into root 3 minus 1। 2 से 40 को जाता है 20, आंसर क्या होगा? 20
3 plus 1. Sorry, option number A. If the angle of elevation of the sun changes from 30 to 45 degree, the length of the shadow of a pillar decreased by 20 meter. The height of the pillar, same type of question. So let's do it. क्या होगा इसमें? सन का एलिवेशन जो है 30 से क्या हुआ 45 डिग्री. देन पिलर का जो शेडो है, मान लो फुल शेडो है x, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जब 30 से 40 डिग्री होगा तो तब 20 माइनस 1 माइनस 20. दिस इज द एज. अब क्या होगा 10 30 12 is by x and 1045 12 is by x minus 20. 1030 means 1 by root 3 is equal x. This is 1, so a is equal x minus 20. X will be a plus 20. Here we substitute value of x, so a plus 20 will, this will be cross multiplication, a is root 3 will a plus 20. So as will take in the common and 1 will 20. A is equal 20 by root 3 minus 1. Further, we will do the multiplication in both numerator and denominator. Then this will be by root 3 minus 1. Now we will multiply by root 3 plus 1 both numerator and denominator. So this will be 20 root 3 plus 1 by root 3 minus 1 into root 3 plus 1. फिर नीचे क्या होगा 3 minus 1 ऊपर होगा 20 root 3 plus 1 2. यह होगा 2 2 से 10. So answer will be root 3 plus 1. So this is the answer. It will be the option. The next same type of question. The length of the shadow of vertical tower in the level ground increased by 10 meter. So first of all we will draw the same right angle triangle. इसमें क्या हुआ पहले था 45 डिग्री, फिर हुआ 30 डिग्री. सो इसमें 10 डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ. ये होगा 10 डिग्री 10 मीटर सॉरी 10 मीटर का लेंथ शेडो का लेंथ इंक्रीज हुआ. So let's this value is x, then whole length of the shadow will be x plus 10 and this height is h. We need to find out the height of the tower h. Same we will find out the ratio. Trigonometry ratio 10 30 will be the value is by x plus 10, then again
10 45 degree is by x. 10 30 means 1 by root 3 is by x plus 10. If value is 1 is by x. So is equal x. Now substitute the value of x. X will be is and this is 10. So cross multiplication is plus 10 equal to 3 is. Then is will be common taken, is taken common, 1 equal 10. So the value of is will be 10 by root 3 minus 1. So again we will multiply both numerator and denominator by root 3 plus 1. So नीचे होगा 3 minus 1 ऊपर होगा 10 root 3 plus 1. This will be 2 by root 3 plus 1. So 5 root 3 plus 1, option number A. If you found this lecture helpful, to make sure to like this video, share with your friends and keep practicing. Jai Hind.